So today, one shot for cell, the unit of life. Cell, cell. Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. सेल ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. बाय द वे दीज नोट्स हैव बीन रेफर्ड फ्रॉम PW. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Anton von Leeuwenhoek, he is a scientist. Highlight this point like this, double highlight, and highlight this live cell क्योंकि उसने उसी का जो काम किया था. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Anton von Leeuwenhoek एक साइंटिस्ट है बहुत बड़े. उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया. Cell theory was given by two scientists, Schleden and Swan. किसने सेल थ्योरी जो है उसे दो साइंटिस्ट ने बनाया फिर दिया था. दैट इज स्क्लीडन एंड श्वान. It states that all plants or animals are composed of cells and products and their products. ठीक है, इनके जो सेल थ्योरी वो क्या है वो स्टेट करती है कि सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेल से ही बने हुए हैं और उनके जो आउटकम्स है फिर रिजल्टेंट्स है फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो भी सेल से ही बने हुए हैं. एंड नाउ अब देखो एक नया साइंटिस्ट आ गया यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो. फर्स्ट हाईलाइट द साइंटिस्ट नेम. रुडोल्फ विर्को भी यहाँ पे. रुडोल्फ Virchow explained that new cells arise from pre-existing cells. Omnis cellula e cellula. उसको मतलब एक लैटिन भाषा में शायद ऐसे बोलते. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड फाइनली मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. रुडोल्फ विर्चो ने न्यू सेल्स कैसे अराइज होते हैं पहले के सेल से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, और उसे ही क्या कहते हैं लैटिन भाषा में? ओमनिस सेलुला ई सेलुला. फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का देखिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर सेल्स. ठीक है, ये तो आपने पता ही था. These notes will be available on this channel's description. Okay. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. All living organisms are composed of cells and products of cells. ये वाली लाइन. Second, all cells arise from pre-existing cells. जो न्यू सेल्स हैं वो पहले pre-existing cells से ही बनते हैं. Then an overview of cell. Okay. Cells differ greatly in size, shape and activities. Cells जो है वो साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में बहुत हद तक डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने आप को. जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या एग्जांपल? माइकोप्लाज्मा. क्या दिया है? माइकोप्लाज्मा इज स्मॉल The microplasma is smallest cell, that is 0.3 micrometer. ठीक है. Egg of an ostrich is the largest isolated single cell. ठीक है. Here cytoplasm is main arena of cellular activities in both plants and animals. Cytoplasma is main arena
of cellular activities in both plant and animal cells. Now it's prokaryotic cells. Lack membrane bound nucleus and cell organelles. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता एंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता. Prokaryotic cells is represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma and PPLO, that is 0.1 micrometer. ठीक है. Prokaryotic cells, in addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA called plasmids. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीनोमिक डीएनए के अंदर एक पॉइंट ऐड करने जा रहे तो जो बहुत सारे बैक्टीरियाज है वो छोटे से सर्कुलर डीएनए में रहते हैं जीनोमिक डीएनए के बाहर, उसको कहते हैं प्लाज्मिड. आपको दिखा रहा हूँ मैं प्लाज्मिड कैसा होता है. देखिए सी, देखिए ये होता है प्लाज्मिड. ठीक है. All prokaryotic have cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. एक्सेप्शन को ध्यान में रखिए. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. सारे प्रोकैरियोट्स के पास एक सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करने के लिए, फिर बचाने के लिए, फिर प्रोटेक्ट करने के लिए. Most prokaryotic cells have a cell envelope which is tightly bound 3-layered structure. The outermost one is glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. Okay. Next, mesosomes are extensions of plasma membrane into the cell. Mesosomes जो है वो plasma membrane के extension है cell के अंदर. It helps in cell wall formation, DNA replication, distribution of daughter cells, respiration, secretion process, and increase the surface area of a plasma membrane. Mesosomes are extension of plasma membrane into the cell. Mesosomes जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सटेंशंस है. ये जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में भी मदद करते हैं, रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, सेक्रेशन प्रोसेसेस में भी मदद करते हैं, इंक्रीज. और ये जो सरफेस एरिया जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो भी बढ़ाते हैं ये लोग. बहुत बढ़िया. इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स. साइनोबैक्टीरिया में जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं उनके बाद होते हैं पिगमेंट. क्रोमैटोफोर्स कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं. क्रोमैटोफोर्स व्हाट इज दिस यार. ये देखिए ये होता है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. और इसमें देख सकते हैं ये सब होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Prokaryotic cells have cell surface structures called flagella, villi, and fimbria. Prokaryotic cells have surface structures like flagella, villi, and fimbria. बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी रह सकते हैं, नॉन मोटाइल भी रह सकते हैं. अगर वो मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजेला है. इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजेला composed of three parts: filament, the longest portion, hook, and basal body. Bacteria on the basis of staining can be gram positive or gram negative. Ribosomes are non-membrane bound organelles. Ribosomes जो है वो non-membrane bound organelles है. Ribosomes are 70 years, has subunits 50 years and 30 years. Ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome. ठीक है, और polysome. Reserve material is stored in the form of inclusion bodies in the prokaryotic cytoplasm. रिजर्व मटेरियल में इंक्लूजन बॉडीज को मतलब जो रिजर्व बॉडी जो है उसे इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में उसे स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर. द एग्जांपल्स आर phosphate granules, cyanophysian granules, and glycogen granules. Then gas vacuoles. Gas vacuoles are found in blue-green algae, purple, and green photosynthetic bacteria. Okay, ये हो गया अपना prokaryotic cell. Yeah, now we have eukaryotic cell. Okay. The eukaryotic includes all the protists, plants, animals, and fungi. The eukaryotes include all the protists, plants, animals, and fungi. Besides the nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound structure called organelle, like HR, ER, Golgi complex, etc. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have another membrane-bound structure called organelles, like ER, Gold College, like ER. What is given? ER दिया ना, तो क्या बोल रहे तुम? Like ER, Golgi complex, etc. Next point, cell membrane is mainly composed of proteins and lipids. ठीक है, और mainly किससे composed है? Phospholipids से. Highlight this point. Membrane proteins can be integral or peripheral. सही बात है. Most accepted model for structure of cell membrane is fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. Most accepted model for structural of cell membrane, सबसे ज़्यादा accepted model structure of cell membrane के लिए वो है fluid mosaic model given by Singer, Nicholson. Given by Singer and Nicholson in 1972. When? In 1972. चलिए, अरे साइंटिस्ट का नाम आ गया, हाईलाइट मारे यहाँ पे हाईलाइट, जिसको उसने किया है वो उसको भी हाईलाइट. आगे, मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. द quasi fluid nature of lipid enables lateral movement. The quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer.
This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of membrane is important for cell growth. Fluid nature जो है वो cell growth के लिए important है. फॉर्मेशन सेलुलर फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा. सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर टू फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंगाई एंड प्लांट्स. ठीक है. देन प्राइमरी वॉल. सेल वॉल ऑफ अ यंगर प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ growth which gradually diminishes as the cell matures. ठीक है. देखो वापिस से सुनो क्या बोला है. Cell wall of a young plant cell is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures. Okay. Now second wall. As cell matures, it is formed on inner side towards membrane of the cell. ठीक है. Middle lamella. It is a layer mainly composed of calcium pectate that holds different neighboring cells together. ठीक है. Now cell wall of algae. What does line under it? Cellulose, galactans, mannans, and calcium carbonate. Cell wall of plants में cellulose, hemicellulose, pectin, and proteins. Endomembrane system is made up of ER, endoplasmic reticulum, GC, Golgi complex, lysosomes, and proteins. Then RER means rough endoplasmic reticulum is involved in protein synthesis, and SAR, smooth endoplasmic reticulum, is involved in lipid synthesis. Golgi complex has cisternae that perform processing, packaging, and transporting the materials for secretions. ठीक है. Lysosomes contain hydrolytic enzymes. ठीक है. Vacuole is a single membrane called tonoplast, bound organelle found in the cytoplasm containing water, sap, excretory product, and other material are useful for the cell, and they occupy 9% of volume of plant cell. Plant cells have largest cell wall, central vacuole. सही है. Ribosomes are non-membrane bound organelles that are 80s cytoplasm and 70s mitochondria and chloroplast involved in the protein synthesis. Mitochondria is the site of aerobic respiration and produce cellular energy in the form of ATP. ठीक है. Mitochondria is the site of aerobic. Okay, ये हो गया. Each mitochondria is a double membrane bound structure. It contains single cellular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosomes, 70S, and the components required for the synthesis of proteins. Plasmids are found in all plants and in eukaryotes. Chloroplast contains chlorophyll and carotenoid pigments. Leucoplasts are colorless plastids. याद रखते चलो इसे. Amyloplasts store carbohydrates, example potato. Elioplasts store oils and fats, where the eleuroplast stores proteins. Chloroplasts are double bond membrane structure. The stroma of chloroplast contains a small DNA-stranded circular DNA molecule and ribosome 70S. Cytoskeleton is an elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm. It involves in many functions such as mechanical support, motility, and maintenance of the shape of cells. ठीक है. चलिए, let's move forward. Cilia and
flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. चलिए सही बात है, एकदम सही बात बोली जा रही है यहाँ पे. The central core in cilia and flagella is axonomy. Axonomy having 9+2. अरे इसको करे पॉइंट, पूरा पॉइंट होना चाहिए. Both cilium and flagellum arise from central-like structures called basal body. करे इसको ऑनलाइन. Okay. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles having 9+2 array of microtubules. Centrioles form the basal body of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. Nucleus was discovered by Robert Brown. And chromatin by Fleming. जो न्यूक्लियस है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, जो क्रोमैटिन है उसे फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया. Interface nucleus has chromatin, nuclear matrix, and nucleolus. Nucleus has the membrane, and the space between the two membranes is perinuclear space. Chromatin contains DNA. Some basic histones now known histones and some RNA. Okay. Every chromosome has primary construction called centromere. On the sides of the which this shaped structures called kinetocores are present. Microbodies are membrane-bound minute vesicles which contain enzymes and are present in both plant and animal cells. चलिए इसके साथ अपना सेल चैप्टर भी कंप्लीट होता है इन वन शॉर्ट लेक्चर. बाय बाय. वो वीडियो देखते हैं. वाओ मिस्टर आर्किटेक्ट पर प्लम्बिंग और ड्रेनेज से लीकेज एक्सपेंसिव इंटीरियर पे पानी फेर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.